start today's session. नमस्कार, इको सवेरा की ओर से मैं सोनू शर्मा आप सभी का आज के इस जागरूकता सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस सत्र का विषय है रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग वाटर। आज का सत्र इस उद्देश्य के साथ आयोजित किया गया है कि सभी जाने और समझे कि जल जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको कैसे सावधानी से उपयोग किया जाए व व्यर्थ होने से बचाया जाए। Before starting with the session, I would like to briefly introduce Eco Savera Trust. Eco Savera Trust is a non-governmental organization that aims at devising and implementing a master plan for city waste management. Our mission is to create awareness amongst people and sensitize them towards making the city clean and pollution free. We do awareness sessions on the importance of waste segregation in schools, marketplaces, and residential areas. We conduct workshops for domestic helpers, garbage vendors, garbage pickers, etc. We regularly organize tree plantation drives and anti polythene campaigns in nearby areas. We recently started with a new series that is webinar. We conduct awareness webinars like this every month. इको सवेरा की विचारधारा है कि लोगों को सिखाया जाए, समझाया जाए और उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ा जाए तो पर्यावरण संरक्षण का कार्य व इसमें सुधार अवश्य ही संभव है। हमारे आज के एक्शंस हमारे आने वाले कल को तय करते हैं। बीते कुछ समय में वाटर पॉल्यूशन काफी तेजी से बढ़ा है, जिससे पानी की कमी का सामना अधिकांश क्षेत्रों में करना पड़ रहा है। हम बीते हुए कल में जाकर उसे नहीं बदल सकते, परंतु आज भी वक्त रहते सावधानी बरती जाए तो भविष्य में सुधार जरूर संभव है। इसी सोच के साथ आज का यह सत्र आयोजित किया गया है ताकि हम सब जान सकें कि इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू यू ऑल आवर स्पीकर ऑफ द डे, मिस्टर निर्मल मेहंदले सर। Sir is a graduate from Delhi College of Engineering with a BE in Mechanical Engineering. Sir is a technocrat with an experience of over 35 years in environmental engineering and consulting. Sir had worked with various eminent organizations in the above said field. Sir is an expert on water waste management and has a specific interest in utilizing natural systems for water conservation. Sir is a recipient of the Swachh Shri Award and Udyog Shri Gaurav Samman Award. Sir has always been a constant pillar of support to Eco Savera in various environmental activities and such sessions. We welcome you, sir. Now, I introduce Mrs. Pooja Bahl ma'am. Pooja ma'am is the founder of Eco Savera. Pooja ma'am has been working in the field of waste management for the last 10 years. She did MSc Zoology and MPhil in Environmental Studies. She was a postgraduate teacher for over 8 years, now a full-time environmentalist and a social activist, working consistently to make our Mother Earth cleaner and green. I welcome you, ma'am. Now, I request Pooja ma'am to Thank you. take the session ahead. Thank you, Sonu. Welcome, sir. मंडले सर, वेलकम गौर अंकल। गौर अंकल भी हमारे साथ हैं। नेक्स्ट सेशन सर के साथ ही है हमारा। थैंक यू पूजा जी। सर, मैं मंडले सर से 2017 में फर्स्ट टाइम मिली थी और तब से आज तक मैं जुड़ी हुई हूँ सर के साथ। और मिली में थी पर्पस था उस टाइम वी आर सर्चिंग फॉर द सिंगल एनी सॉल्यूशन फॉर द सिंगल यूज प्लास्टिक। तो सर की डॉटर है नेहा जो कि इस चीज में काम कर रही थी। तो फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात सर से तभी हुई थी कि सर ने मुझे बताया था कि शुगर केन बगैस के किस तरह हम सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड करके ये चीज हम एनवायरनमेंट के लिए ला सकते हैं अपने सिटी के लिए।
उसके बाद सर से हम लोग कंटिन्यूअसली टच में हैं। सर की वाटर वर्कशॉप जो हम लोगों ने अटेंड करी है, जो आज लोग जो भी सुनेंगे तो आप सबको ये पता लगेगा कि ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो सर हमें बताने वाले हैं कि जो शायद हम लोग नहीं जानते और शायद जान भी नहीं पाएंगे अगर हम डीप रिसर्च में नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है सेशन के बाद हम इतने अवेयर हो जाएंगे कि जो चीजें हम लोग अभी गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां करना हम लोग छोड़ देंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। और इसके अलावा सर से हम सर की जितनी भी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज हैं, वेस्ट मैनेजमेंट में भी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जो हमारा एक हमने लास्ट शायद जून जुलाई में हम लास्ट ईयर मई में हम लोगों ने एक लॉन्च किया था इसका अपना शेडर मशीन, जो कि हमने सर से ही बनवाई है। सर का जैसे सर मैकेनिकल इंजीनियर उन्होंने बताया और अनंत उद्योग के नाम से सर की फैक्ट्री है, तो सर ने हमें वो बना के दी है। तो हम आरडब्ल्यूएस को हम लोगों ने ऑफर दिया हुआ है कि जो हमारा ग्रीन वेस्ट जो कि हॉर्टिकल्चर वेस्ट जो कि लैंडफिल में जाता है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, कई बार एमसी मतलब म्यूनिसिपैलिटी को कॉल करने के बाद भी नहीं आते वो लोग उठाने। तो इस सिंपल सी मशीन है जिसमें कि हम इसको डाल सकते हैं अपना हॉर्टिकल्चर वेस्ट को, और इसका जो पाउडर है उसको हम किसी भी पार्क में या किसी भी एक क्यारी में कहीं डाल देंगे जो अपने आप ही कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज ये हमारा एक वीडियो है, सोनू इसको बता दीजिए वीडियो को कि किस तरीके से जो क्या कहते हैं हमारा लीव्स है, जो ड्राई लीव्स हो जाती हैं, और मोस्टली हमारा काम आएगा फेब्रवरी में, उस टाइम पे जब पतझड़ होता है बहुत लीव्स निकलती हैं। तो मेरी जितने भी आरडब्ल्यू के मेंबर यदि यहाँ पर हैं तो वो इसके लिए भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग इसको डोनेशन बेसिस पे प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन सर से हमें मिला है कि किस तरीके से हम अपने हॉर्टिकल्चर वेस्ट को संभाल सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ओवर टू सर। सर अब स्टार्ट कीजिए, हमें बताइए, आपका ब्लेसिंग्स, आपका सब कुछ हमें हमेशा चाहिए। Thank you, Pooja ji. Hello, am I hearable? यस सर, यस सर। Pooja ji, thank you. Today we will delve more on water and how to sort of clean it in a very easy way, जिससे कि हमारे खर्चे भी कम रहें और काम भी हो जाए। उससे पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से हम छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, और पानी जो कि बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है हम सभी लोगों के लिए, मतलब सिविलाइजेशन जब से इस वर्ल्ड में सेटल हुई है, वो आप अगर नोट करें तो इट इज़ बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, बिकॉज ये इक्वेटर के पास जितना एरिया है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन ग्रो होती है और पानी भी अवेलेबल होता है। और जो हमारी कंट्री है इंडिया, इसमें सबसे बड़ी समस्या हेलो हाँ जी सर, यू आर ऑडिबल। ऐसा है, मैं ऑडिबल, लेकिन मेरा एक होल्ड करना एक मिनट। कोई नहीं सर। Can you see? यस सर, यस सर। Now, very important is, as I said earlier, water के बगैर हम लोग जी नहीं सकते। सबसे इम्पोर्टेंट, जायदाद कितनी भी हो, कुछ भी हो, बिना पानी के हम जी नहीं सकते। नाउ इफ यू लुक एट इट, ये यूनेस्को के आईएचई करके एक इंस्टीट्यूशन है जिसने ये अप्रॉक्सीमेशन दिया है कि 3000 लीटर ऑफ वाटर पर डे पर पर्सन इज नेसेसरीली रिक्वायर्ड इन इंडिया
In the context of foreign countries, of course, it can be more or less depending on the area where we are. बट अगर हम लोग जनरली डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं जी पीने के लिए क्या पानी चाहिए जी, 5-7 लीटर या 10 लीटर पानी यूज होगा, और नहाने धोने के लिए और खाना पकाने के लिए एट द मोस्ट 100-125 लीटर पानी यूज होता है, ऐसा हम सोच के चलते हैं. बट अगर हमारा दिमाग हम और स्प्रेड करने की कोशिश करें तो इट इज अ माइंड बॉगलिंग फिगर कि कितना पानी हम लोग यूज करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो देर आर वेज इन विच वी आर कंज्यूमिंग डायरेक्टली, जो हमें नजर आ रहा है डे टू डे एक्टिविटी में, और कुछ एक चीज है जो हमें नजर नहीं आ रहा. फॉर एग्जाम्पल, जनरली द थिंग 135 लीटर पर पर्सन पर डे, ये इंडिया में काफी कॉमन है ये फिगर जो है, where we say bathing 55-30 liter, in flushing, washing clothes is 20 liter, house cleaning is about 10 liters, washing utensils is 10 liters, cooking is about 5 liters per head, and drinking is about 5 to 10 liters. ये थोड़ा सा वेरिएशन आता है डिपेंडिंग अपॉन द सीजन एंड द लोकेशन. इसके अलावा भी हम अगर अपना फुटप्रिंट कोशिश करें देखने की तो इट इज अ वास्ट फुटप्रिंट. फॉर एग्जाम्पल, if you have to use water, where all do we use? We have hidden water which we actually are using but indirectly using. For example, in agriculture, in manufacturing activities of various equipment, including your automobiles and electronic goods, and of course the clothes and things that we wear. So practically whatever you think, you are necessarily going to use water into the production of that. So our footprint is so large. आप जरा गौर करें. The wheat that we eat is about 1300 liters per kg. Rice that we eat is 3400 liter per kg. Milk is 1000 liter per liter. Sugar is 1500 liters. Tomatoes is 214. Onions is 272. Astonishingly, onions consumes more than what the tomatoes consume. And out of the non-vegetarian, chicken per kg 3900 liters per kg, and apples are something like 700 liters per kg. So आप अगर इसको थोड़ा सा विचार करें कि हम रोज जो कुछ खा पी रहे हैं या पहन रहे हैं, इसमें अब ये हमारे बाकी चीजें हैं. One individual car, it takes about 52,000 to 83,000 liters. Shoes is about 8,000 liters per pair. Smartphones that we talk of is about little short of 13,000 liters. Jeans, a very common thing, is 10,850. A cotton t-shirt is 2720. One A4 paper is about 5 liter per page. तो आप देखते होंगे बहुत कॉमन बात है कि हम प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं और कहते हैं अरे ये कॉमा रह गया, ये फुल स्टॉप रह गया, अनदर प्रिंट. सो जैसे ही हमारे यहाँ प्रिंटर्स फास्ट हो गए डे बाय डे, तो वी आर वेस्टिंग लॉट ऑफ पेपर. लैपटॉप्स 190,000, 1,90,000 लीटर, and 1000 square feet house, you consume something like up till 70,000 liter per house. Now this itself is showing कि इतना अगर सीवियर हमारा वो है पार्टिसिपेशन है इनटू कंजम्पशन, so we should be thinking of how to sort of reduce that consumption. And the best method, as I would say, is first of all is we call it as frugal living. हमारे बचपन में हमें याद है बहुत अच्छी तरह कि एक ही पैर जूते का होता था और स्पोर्ट्स शू का एक ही पैर होता था जो स्कूल में डाल के जाते थे. एंड सिमिलरली योर क्लोथ्स वर आल्सो वेरी लिमिटेड. एंड नाउ टुडे व्हाट वी टॉक ऑफ इज मॉर्निंग वॉक के लिए अलग पेयर ऑफ क्लोथ्स है, अलग पेयर ऑफ शूज है, ऑफिस जाने के लिए अलग हैं, पार्टी अटेंड करने के लिए अलग है. सो एज एंड व्हेन वी आर having more and more money and disposable income, as I call it, we are getting into a rat race where we say कि भाई हमने भी ये चीज प्रोक्योर करनी चाहिए. So we buy one mobile phone, we hardly use it for about 2 years, and of course the the mobile manufacturers or the people who are trying to market their products, they're also pushing hard
कि हमें लालच हो जाए कि हम इसको चेंज कर दें for whatever requirement. So similarly, we have other things that we are using in our house. So with every new entrant of gadgets into our house, every new type of clothes into our house, what we are really ending up is consuming more and more water and degrading our environment. So that's the reason why we should care. So now, if it stopped, दिखाई दे रहा है क्या? Yes, sir. ये why should we care is showing. नहीं, मेरे यहाँ स्टॉप हो गया. एक मिनट, लेट क्लियर मी. है सर. एक्चुअली आज थोड़ा सा नेटवर्क में भी इश्यू है उसकी वजह से ना वेदर. तो मैं दोबारा रीसेट कर देता हूँ इसको. हाँ, so we begin from here. Why should we care? So now the next step is we try to see what is the condition of water in our country. अब आप देखेंगे कि 54% of India faces high to extremely high. All the red area is extremely high and the red area is high. It is water stressed. So there is very few part of the country, especially the northeast, is very good for it. The Western Ghats in parts is very good, but by and large, 54% of it is very, very stressed. And we per se are doing this consumption of water, and we are doing it as single use of water, exactly on the lines of single use of plastics. We're not trying to reuse or recycle it at all whatsoever. And what we are expecting in our own houses today is कि हमें ड्रिंकिंग क्वालिटी वाटर गवर्नमेंट दे या म्यूनसिपैलिटी दे, और हम ड्रिंकिंग क्वालिटी वाटर से फर्श भी धोएंगे, घर के कपड़े भी धोएंगे, और ड्राइवेज को 2-3 बार हम साफ करेंगे. आई डोंट नो व्हाट वी एम आउट ऑफ इट. Similarly, we are cleaning our cars and other gadgets with ample amount of water and then trying to blame the municipality for it. Yes, municipality is trying its best with especially the large population that we have in our country. So very, very important is we realize that we are in a highly water stressed area, and it is we individuals who can do a little bit to improve this condition. Now, if you see the whole world as such is facing this water stress by the country. If you see 2040 में ये projection है, and if you see most of India, of course, we are totally red, higher than 40 to 80% withdrawal ratio है हमारा. And even countries like Australia, which is very sparsely dense populated, and America, which is supposed to be a very progressive or rather a very developed world, is all into a stressed area. So our aim should be in India especially to reduce our consumption as far as possible, and at the same time try to treat it and use it wherever we can. So it's not necessary that for gardening we try to use very good quality of water in terms of the contaminants in it. And I believe we can do a lot of things there. So it is of course the government's or the authorities' job to clean up that water. But at the same time, we who are living in a lot of large societies and campuses, we can definitely try to contribute to this to a great extent. So as they say, when the well is dry, we know the worth of water. And the time to act is now. So this is लातूर के पास में एक well का ये photograph है. So simple saving ideas is a lot of us must be definitely aware because ये काफी साल से चल ही रहा है repeatedly. So water saving through your fittings, there are fittings which are reducing your consumption of water
There is organization of Rotary which also is giving aerators, जो ये faucets में लगते हैं वो aerators 50% water consume करते हैं in the same amount of time. So that's a very simple device. Don't keep the taps running, or even drop by drop leakages are also to be looked into. In fact, we as citizens should be definitely trying to report in case we have leakages in pipeline of the municipalities or the authorities. Use buckets to wash your cars and driveways, and limit showers. In fact, instead of showers, we should get back to the old days where we had bucket and a mug arrangement. So I as such, we tried to do some natural wastewater treatment system for recycling and reuse. The first attempt was done in Gurgaon in the Arauli Biodiversity Park, for which we worked along with the Municipal Corporation Gurgaon. Eventually, we worked with Gurujal in Gurgaon. That was for village wastewater going to the pond. So that is the village Daulatabad, that's west of the railway line in Gurgaon. So they generate something like, part of it is about 350,000 liter of water, and we are treating that water by natural means without use of any electrical energy whatsoever. And it's a simple system. So I'm just trying to show you what it is. So that's why we say it natural wastewater treatment system. So we call it as anaphyto. The word anaphyto means anaerobic, and phyto means growing plants. Like, Plants. Anaphyto. So light, of course, is trying to grow those plants. You're rightly saying that, Pooja ji. But we call it as phytoremediation, so to say. So you grow plants and then try to treat the water. So here it's a eco-friendly method using microorganisms and plants for treatment. It is a unique design for superior system performance. There is no risk of mosquito breeding with subsurface flow wetland. I know I'm going to get a lot of questions on this matter of mosquito breeding, बिकॉज हमें सबको सोचना ये है कि मॉस्किटोज ब्रीड कहाँ होते हैं और क्यों होते हैं. ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है. मोस्ट ऑफ अस कहीं कचरे का ढेर देखते हैं. मैं भी आरडब्ल्यू का सेक्रेटरी रहा हूँ सेक्टर 15 में. थोड़ा सा कचरे का ढेर दिखे तो पीपल स्टार्ट टॉकिंग ऑफ जी मॉस्किटो ब्रीड हो रहे हैं. Pumping is not required as water mainly flows by gravity here. Treated water can be successfully used for irrigation, gardening, construction and flushing. And it's a aesthetically pleasing constructed wetland, can be a part of urban landscape. आज अगर हम देखते हैं कि पानी की ट्रीटमेंट के लिए पानी जाता है, म्यूनिसिपैलिटी उठाती है, it doesn't really reach there properly, and whatever we see is foul smelling water and related activities along with that. So here we begin with the process. It's a small flow diagram that we've tried to show. There is a small screen chamber so that large sized objects are removed there. Otherwise they tend to go and choke up the system. So particles as large as above 8 millimeter are stopped here. There's a special kind of a screen set up there. Unfortunately, the screens being set up by the authorities today are not up to the mark, resulting in जो कुछ हम देखते हैं भाई सीवेज वाटर प्लांट में पानी जाता ही नहीं, बिकॉज दे गेट ऑल चोक्ड अप. नालियों में पानी प्लास्टिक्स की वजह से चोकअप होते हैं मेनली. देन you have a settling chamber followed by an anaerobic module. Now the anaerobic module, basically the word anaerobic is devoid of oxygen. This has been done to reduce the size of the plant. And what we put here is plastic media on which the bacteria try to grow, and they try to generate CO2 per se. Of course, very little methane is generated, but then it's not worth harnessing as of now. Followed by this semi-treated water goes to a leca bed. So the leca bed is light
expanded ceramic aggregate. So it's very light. It's being used in gardening also at times. We try to grow bacteria on that substrate of the porous ceramic aggregate, and the bacteria treats this water to a great extent, which finally reaches the bottom of these phytoremediation beds. I'll show you those photographs also. Now the phytoremediation beds primarily are the bottom side we have filled in coconut shells, which are a waste product out of the municipal waste. People don't know what to do with it. So we have set them down there, followed by filling up of fly ash from thermal power plant, again a waste product. Over that, we've put in a little amount of, say, 2-inch thick soil, and then planted particular varieties of plants. Now, the water per se cannot be seen to the human eye excepting the plantation that is available. And finally, this water gets into another small size leca bed. The size of the leca particles become something like 3 millimeter, so that you do a little amount of filtration before the water leaves this area. We have a little chlorination being done for obviously removing the pathogens, if any, because water, if it is carrying waterborne disease, we should not be spreading it out into the pond or whichever area we are talking about. Now, the beauty of this system, it is low in operation and maintenance. It is easy to maintain with limited training. You basically need only a gardener to maintain that, and it is largely self-sufficient, because once you start giving water to the plantation thrives on its own, and it looks really very good and green. So in the maintenance, the anaerobic modules, they require sludge removal. You can have larger biogas collection things also, but in the smaller arena where we are talking of small societies and things, this generation of biogas is not economical. And then the constructed wetland and leca beds, you need to remove only the removal of weeds and cleaning or replacement of the substrate, which may happen once in, say, 6 to 7 years. The screen and collection tank, we need to clean those screens almost once every day. And the grit and the sludge, because हमारे यहाँ रेत बहुत आती है, it's a dusty country, तो वो grit निकालने की जरूरत पड़ती है, otherwise they go and choke up the constructed wetland. And maintaining clean area to ensure workplace safety, checking and cleaning of inlet and outlet structure of all modules, checking and refilling chlorine dosing tanks. Now, if you see, this is a case study, as I said. This is how the Daulatabad village pond used to look. It had all kind of dirty water coming in, and as you can see, the color is very bad. Down there, you see you have all the phyto remediation activity going on. So there was a group of kids who tried to do some very good painting on the wall, but then once these flowers started coming up there and all the plantation, it started giving you some very good effect. And eventually the the painting done by those kids with so much of efforts took a back seat in front of the natural flowers, which of course everybody likes. Now, originally this was a seasonal pond used by locals to grow vegetables. You can go to the website of Gurujal and actually see that लोगों ने इस पे बयान भी दिए हैं. Waste and wastewater dumping was happening for many years. That means we were silting the village pond. Wastewater from 700 households was coming to this area, and it was a source of groundwater contamination. And because of this unkept growth, the mosquito breeding and eyesore for nearby residents was happening. So these are the views on the right side bottom. If you see, this was how the pond was looking before we started our activity there. The ideal solution, supported by Gurujal and funded by Power Grid, this national treatment solution was with minimal cost, easy to maintain,
As I said, coconut shells for constructed wetland were used, which is uh, municipal waste altogether. Creation of green area in the locality. And if you see the result before and after. So the best item that is sort of checked is the biochemical oxygen demand, which was 231 on the inlet side, and after treatment it was 10. So even the suspended solids was 306. That means undissolved matter, which became 8.2 milligram per liter. So we were getting very good clean water going to the pond. So this is how, if you look at it on the left hand side, the pond was looking like this before we took over. Now the area looks like this in the middle one. If you see, this is the bioremediation activity. You have the beds there, and this is the pond how it looks as of now. That's an aerial view, and this is the growth happening there. So I think as such, this presentation of treatment of water is over from my side, and we can get into any questions if you have. थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन जो अभी आपके बात सुनते सुनते मेरे माइंड में आया कि जो हम ये आपने यहाँ पे गुड़गांव में और इधर किया है, क्या ये पॉसिबल है कि आरडब्ल्यूएस के द्वारा ये अपने ऐसे एरिया जो कि डंपिंग यार्ड या बिल्कुल बंजर जो जमीन पड़ी हुई है वहां पे उस तरीके से किया जा सकता है, जैसे हमारे एरिया के पीछे को कैनाल जा रही है, बुढ़िया नाला कैनाल जिसको बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उधर जो है मतलब सारा गंद भी आ रहा है और सीवेज वाटर भी आई थिंक उसी के अंदर जाके मिल रहा है, इंडस्ट्रियल तो वाटर भी है और सीवेज भी है। सीवेज भी है, तो हाँ वो जी, हम लोगों के लिए तो खैर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो, हाँ। और जो स्लम एरिया है उनके लिए भी प्रॉब्लम है। ऑल्दो तो कुछ सॉल्यूशन उसका है इसके थ्रू के, अगर आरडब्ल्यूए के लेवल पे कुछ हो सकता है इसका? देखिए जी, एक बिल्कुल अगर शुरुआत की बिगिनिंग करनी है तो मेरे ख्याल से जैसे आपकी सोसाइटी है, यस सर। सोसाइटी का जो वाटर है हम पार्शियली उसको लें, बिकॉज मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स हैं, तो बाय ग्रेविटी लेके हम उसका पानी अपने ही ग्रीन एरिया में, जैसे एडजेसेंट आपके ग्रीन एरिया है बिटवीन योर सोसाइटी एंड द हाईवे, तो विद द ड्यू परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, इफ यू कैन डू समथिंग देयर, यू विल हैव अ नाइस ग्रीन एरिया, एंड दिखने में भी अच्छा दिखेगा, और ये वेस्ट वाटर जो जा रहा है ये वेस्ट आपके ग्रीन एरिया डेवलप करने में काम आएगा। नंबर वन। नंबर टू, जो उसकी आउटलेट है, फाइनल आउटलेट, उसको आप एक छोटा सा पंप लगा के आप अपनी गार्डनिंग में ऐड कर सकते हैं, तो आप वाटर कंजम्पशन अपना कम कर लेंगे। सर एक्चुअल में जो आपने देखा था जिस एरिया में आप आए थे वो एक बहुत छोटा सा अपार्टमेंट एरिया है, हमारी हाँ, जो कॉलोनी है वो फ्लैट सिस्टम है, वहां पे वो मल्टी स्टोरीड वाला नहीं है। तो हमारे यहाँ प्रॉपर जैसे सेक्टर्स में होता है उसी तरीके का अरेंजमेंट है, बस फ्लैट सिस्टम्स है यहाँ पर। वो जो बराबर है। तो कोई ग्रीन एरिया होगा, कोई ग्रीन गार्डन होगा, कोई पार्क, ओपन हाँ स्पेस पार्क है। होगा, पार्क होगा, उसमें अगर एक छोटा सा कुछ बनाए तो बिल्कुल कामयाब होगा। आपका पार्क वेस्ट वाटर से ही, ट्रीटेड वेस्ट वाटर से ज्यादा हरा भरा नजर आएगा। गुड। तो फिर हम कर सकते हैं इसके ऊपर बात हाँ, ना मतलब आगे। मैं इसमें ऑफ कोर्स अभी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगा। हमने हम्म। अरावली बायोडायवर्सिटी में 52 मकानों का काम किया था कोई 5 साल पहले। डीएलएफ के मकान थे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास पानी नहीं था टू सप्लाई टू द अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क। सो हम लोग इसे ट्रीट करते थे, वो पानी ट्रैक्टर ट्रॉली में पंप से हम डाल के दिन में 30,000 लीटर पर डे हम देते थे, तो ओके। वो उनकी गार्डनिंग हो रही है, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड इनफैक्ट जिन घरों के सामने हमने चालू किया, जिन घरों के सामने हमने चालू किया, वो शुरू में थोड़ा सा रेजिस्टेंस था कि जी बदबू आएगी, जो भी आएगा, बट देन दे वर फेसिंग अ ड्राई फॉरेस्ट विच वाज अरावली फॉरेस्ट, लाइक अ डेजर्ट काइंड ऑफ अ फॉरेस्ट, एंड व्हेन दे एक्चुअली सॉ गुड ग्रीन एरिया, उनमें से एक वकील साहब भी थे जो शुरू में लड़ने के लिए तैयार थे कोर्ट में। सर प्रॉब्लम तो यही आती है ना, लोग है ना, सुनने के बट वी बजाय हैव टू टेक पीपल टुगेदर to a यस certain extent, and unless those people join hands, I don't think the government alone can do anything in this. एग्जैक्टली।
सोनू, हाँ जी, over to you. सर एक क्वेश्चन है हमारे पास जो हाँ, किसी ऑडियंस में से पूछा है हाँ कि जी, वो काफी सालों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज कर रहे हैं, हाँ, बट फाइनेंशियल रेस्ट्रेंट्स की वजह से उनके पास प्रॉपर चैनल नहीं है। वो अपने रूफटॉप से वाटर को चैनलाइज करते हैं और एक ड्रम में स्टोर करते हैं, हम्म, बट ओवर अ टाइम काफी शॉर्ट पीरियड में उसमें कुछ इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज दिखने लगते हैं। तो हम्म। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, अब सवाल ये है पानी कितना है, पहली बात। दूसरी बात, डिपेंडिंग ऑन द एंड यूज, यू कैन डेफिनेटली डू समथिंग अबाउट दैट। अब जैसे ये कह रहे हैं उसमें कीड़े हो जाते हैं, दैट प्रोबेबली शोज कि उसमें मॉस्किटो ब्रीडिंग हो रही है। इफ यू लुक एट नेचर, द नेचर हैज ऑल दीज काइंड्स ऑफ क्रीचर्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स। हमने एक इधर किया हुआ एक एक्सपेरिमेंट 15 में, जहाँ पे हमने एक छोटा सा पॉन्ड बनाया है। उस पॉन्ड में फिश भी हैं, फ्रॉग्स भी हैं, वाटर के प्लांट्स भी हैं। तो you have little amount of water lilies also there. You also have birds coming in and trying to keep their balance of eating food. They try to hunt on the fish there. अब जब ये टोटल इकोलॉजी ठीक तरह से चलती है तो उसमें मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं होती। थोड़ी बहुत जो होती भी है, you have so many natural things which take care if you are able to grow them. फॉर एग्जाम्पल, बचपन में हम देखते थे, वी यूज्ड टू कॉल देम एज हेलीकॉप्टर्स। एक टिड्डी होती थी, जो उड़ती हैं। Okay, so there are 4 or 5 types of those dragonflies, we call them. And astonishingly, each of those dragonflies can eat something like 500 mosquitoes a day. They hunt on mosquitoes. The frogs, they hunt on the larvae. The fish, they hunt on the larvae. So मेरे घर में मेरे ख्याल मैडम आपने देखा था, पूजा जी, और आपके साथ और भी साथी आई थी, लेडीज. So they had Yes, sir. seen a small lily pond there, water lilies. It has small fish there, and Yeah. I think 5 साल से तो मच्छर होते नहीं उसमें, हो ही नहीं सकते, बिकॉज वो फिश खा जाते हैं उसका जो कुछ खाना है वो। सर, बेसिकली लोगों का माइंडसेट चेंज करना, लोगों को थोड़ी सी बायोलॉजी और साइंस का थोड़ी नॉलेज यदि होगी एग्जैक्ट, तो हमारा जो इको बैलेंस, जिसमें हम पढ़ते हैं हाँ, हम लोग एनवायरमेंटल बायोलॉजी में, कि इको बैलेंस जो है अपने आप नेचर ने अपने आप पूरा कुछ फिक्स किया हुआ है, एग्जैक्टली, बट एज ए ह्यूमन हम उसके अंदर इंटरफेयर करके उसको खराब कर रहे हैं और अपनी सेल्फिश उसके लिए चीजों को खराब करते जा रहे हैं। यू आर एग्जैक्टली राइट। नाउ कमिंग बैक टू दिस, वी से कि जी हमें आजकल फ्रॉग्स नजर नहीं आ रहे, टैडपोल्स नजर नहीं आ रहे। व्हाट इज द रीजन? मेरे ख्याल 40 साल से तो मैंने फरीदाबाद में फ्रॉग्स नहीं देखे थे, लेकिन पिछले 2-3 साल से हमने 2 पॉन्ड्स जो 15 सेक्टर में क्रिएट किए, इसमें हमें टैडपोल्स नजर आने चालू हो गए। थाउजेंड्स में हैं अब वहां। द बेसिक रीजन इज वी हैव स्टॉप्ड ह्यूमन इंटरवेंशन, वी हैव स्टॉप्ड स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स। नहीं तो हम फॉगिंग करते हैं, इंसेक्टिसाइड बिल्कुल होना चाहिए, फॉगिंग होना चाहिए, बट इफ वी गो एंड डू फॉगिंग ऑन दोज पॉन्ड्स, देन द फिश आर लाइकली टू डाई। सो इट इज अ डबल एज्ड नाइफ एक तरह से। तो अगर हम फिश ग्रो होने देना चाहते हैं तो हमें पानी रखना पड़ेगा उनके लिए, उसके साथ बाकी चीजें होनी पड़ेंगी। दैट्स व्हाई वी कॉल देम, द फिश आर प्रीडेटर्स फॉर द मॉस्किटोज एंड द लार्वी, द फ्रॉग्स आर प्रीडेटर्स फॉर द मॉस्किटोज एंड लार्वी। सिमिलर टू दैट, इन द हाउसेज वी हैव लिजर्ड्स। तो हम कहते हैं लिजर्ड जो है रिपेलिंग है, इसको भगाओ यहाँ से। तो इनफैक्ट दे आर क्लीनिंग अप योर हाउस एंड ट्राइंग टू keep them away from insects. So ये एक बड़ा thin balance है, very very thin balance between that. Now astonishingly, फरीदाबाद में आपने जुगनू देखे हैं क्या पिछले 10 साल 15 साल में? अब की बार बरसात में हम आपको शाम को दिखा सकते हैं जुगनू 15 सेक्टर में, एक लिमिटेड एरिया में। यू विल बी एस्टोनिश्ड कि यार 15 सेक्टर में जुगनू कहाँ से आ गए समझ रहे हो? यस सर। हाँ, बहुत अच्छा उसने, मतलब बच्चों ने मिलके, जो समर्थ ने भी उसमें काफी अपना इनपुट डाला था। तो ये वही है कि सबको आगे आना पड़ेगा, सब लोगों को ज्वाइन एंड नहीं, करना पड़ेगा। हाँ, तो it is a difficult exercise to bring people together and start thinking in the right direction. यस, एग्जैक्टली, यस, हाँ, यस सर, इन एवरीथिंग।
चाहे वो चीज में वाटर ऐसे मैनेजमेंट हो, चाहे किसी प्लास्टिक भी वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे एग्जैक्ट गार्बेज वेस्ट हो, कुछ भी हो, हाँ लोगों को माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है और एक साथ ज्वाइन, क्योंकि हाँ, अगर हम गवर्नमेंट पे या म्यूनिसिपैलिटी पे सब कुछ छोड़ेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, नहीं कुछ हमें अपने भी म्यूनिसिपैलिटी एफर्ट्स देने पड़ेंगे। पूजा एक सबमिशन है। अब हाँ निर्मल जी। जी ने इतना कुछ बताया, सब कुछ है। आई रिकॉल रिमेम्बर, निर्मल जी को पता होगा कि आज से तकरीबन 13-14 साल पहले सरकार ने जुनरूम स्कीम के अंदर फरीदाबाद में 300 से अधिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉइंट लगाए। मेरे पास सारा उसका है लोकेशन वगैरह। उसमें महेंद्र जी वो एक कमिश्नर आए थे मोहम्मद शाहीन, हमने उसकी 15-20 की ऑडिट भी किया था। हाँ जी, नागपाल आज जी भी थे, आप भी हाँ थे, जी, हाँ जी, हाँ हम जी। गए थे। हाँ आज के दिन जो है, एक वो जो गांव वाले खुद चला रहे हैं 8 सेक्टर के पीछे, कौन सा गांव है सर वो, हाँ जहाँ वो ज्ञानी तिवतिया वगैरह है, वो खुद सीही चला रहे हैं। सीही है सर, सीही है शायद, आई हाँ थिंक सी सीही सी, हाँ गांव, जी। सीही वो गांव चल है। रहा है, वो चल रहा है क्योंकि उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, ज्ञानी तेवतिया उसकी टीम ने। तो एक चीज़ ये है कि जो हमने बताया 9-300 हैं वो, यू मस्ट बी नोइंग बेटर, दीज हार्वेस्टिंग पॉइंट रिक्वायर मेंटेनेंस लाइक ओवर एसी रिक्वायर एवरी ईयर। वो होता नहीं है, मैनिपुलेशन होती है, हवा हुआ वो ना कंप्रेसर आता ना कुछ, करा के चले जाते हैं। प्रॉब्लम भी आई है, कंप्लेंट भी की है। Why don't now I am coming to the solution? It is very easy to criticize everybody and everybody can do it. सरकार ने काम कर Yes, दिया, हमसे sir. कर। तो मैं कह रहा हूँ कि वाई नॉट एज ए फ्रॉम कॉन्फेडरेशन ऑफ ओवर RW एंड अदर थिंग्स, जो हमारे एरिया में ज़्यादा पॉइंट वो या स्कूल्स में है या पार्क में है, मैंने जहाँ भी देखा है। जैसे 15 सेक्टर के अंदर 2 पॉइंट है, आपको पता होगा, और जगह है, हम अपनी RW से रिक्वेस्ट करके और उसको पॉइंट को हम अडॉप्ट कर लेते हैं और गवर्नमेंट से कहते हैं कि जो आपका एक्सपेंसेस है, दे हैव सम बजट फॉर हाँ दे है मेंटेनेंस ऑफ दिस पॉइंट। जैसे उन्होंने गार्डन दे दिए, हैंड ओवर कर दिए, और गार्डन RWA कर रही है, अच्छे हो रहे हैं आज 15 सेक्टर के गार्डन। इट इज समथिंग वेरी, कभी जिंदगी में नहीं देखे थे सर, जो पिछले 7-8 साल से है। इसी तरीके से इन पॉइंट को भी हम अडॉप्ट करें और उनसे बजट लेके इसको प्रॉपर चले, तो दैट विल आई थिंक अप टू सम एक्सटेंट विल, जो हमारा वाटर लेवल ड्रास्टिकली तरीके से नीचे जा रहा है वो है। और दूसरी साहब, मैं मेहता जी, मैं तो आपको पता है, आई हैव वर्कड लॉन्ग टाइम विद द टाटाज एट पुणे फैक्ट्री के अंदर, जो आपको पता है पिंपरी चिंचवाड़ के पास में है, वो दैट इज इन एरिया ऑफ 800 एकड़, और उस समय 15,000 की टोटल स्ट्रेंथ थी। हमारे क्वार्टर भी, हम रहते भी अंदर थे, सब कुछ था, सब कुछ कॉलोनी थी। उस फैक्ट्री में रोज का 15 लाख लीटर पानी यूज होता था। एंड उस समय की बात करो, आई एम टॉकिंग अबाउट 83-84, एक भी बूंद बाहर नहीं जाता था। वो ट्रीटमेंट प्लांट थे, वो करते, उसको गार्डनिंग में कर दिया, ये कर दिया। वो एक कैंटीन के ऊपर बहुत सारा उन्होंने उस टाइम सोलर हीटर लगा रखा था, उसमें पानी उबलता रहता था, चाय उससे बनती थी। फिर वो बायोगैस प्लांट था, वो रात की जो कैंटीन का खाना बचता था, दिन वाली शिफ्ट का रात वाली में काम आता था रोटी बनाने में, वगैरह वगैरह वगैरह। तो दैट वाज समथिंग लाइक दैट। उनमें एक जो समस्या थी, सिर्फ एक Yes, sir. प्लांट लगाया होता, क्रोमियम था जी, जैसे जहाँ वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है ना जी, हम्म, उसके अंदर वाला जो ट्रीटमेंट था, दैट वाज आई थिंक क्वाइट ए डिफिकल्ट वन। वो उसमें काफ़ी टाइम लगा उनको मैनेज करने के लिए। हम्म। बाकी जो दूसरे वाला ये है, तो इट वाज मतलब कि एग्जाम्पल फॉर एवरीबॉडी टू सी, फॉर स्पेशली ओवर इंडस्ट्री। जब कोई जाए पूना तो जरूर उसको देख के आना जी, मेरा ख्याल अब भी ऐसा ही होगा। हेलो हाँ जी सर। God Saab, chromium definitely is a very big culprit in the industry. In fact, for your information, मैंने first time in the country groundwater remediation contaminated with chromium, हम राइट। लोगों ने MOU है हमारा IIT मद्रास के साथ, तो अच्छा लाइव बैक्टीरिया जमीन के नीचे 90 मीटर डाल के अच्छा 125 एकड़ जमीन, ऊपर मकान बने हुए, नीचे हम काम कर रहे थे. It took us about 6 years to put it in order. ओके सर। So abhi I don't delve into all that. We had made this small presentation only for the understanding of the general citizen as such, राइट कि राइट। भाई क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, possibilities क्या हैं. हाँ जी। Otherwise it's a very big topic, उसमें तो अंत नहीं नहीं नहीं, है मैं फिर. तो सर पहला टॉपिक जो बात करी थी, हाँ. सुनीता तुम भी बात करो और मैं भी करूंगा, आप भी करूंगा। आई हैव ए मीटिंग विद दी MOH ऑन सैटरडे हम्म. म्यूनिसिपैलिटी के।
to take over the maintenance and running of the water harvesting point in the city, which are we have 300 plus point. उसमें से कितने ठीक होंगे आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ तो होगा जी, 150-200 कुछ अगर हम करें तो वो इट विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड आल्सो फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन सर। गौड़ साहब, उसके साथ साथ एक बात और भी है। हाँ जी सर। जितने आसपास, आफ्टर ऑल फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में पॉन्ड्स बहुत हैं, विलेज पॉन्ड्स, बहुत से उसमें से खत्म कर दिए गए। फॉर एग्जांपल ये ओल्ड फरीदाबाद का बढ़ई तालाब जो है, हाँ जी हाँ जी, वो तो खत्म है, ऑलमोस्ट मोर देन 11 acres and 30 feet of depth. They converted that into a park, जबकि वो रिचार्जिंग जोन बहुत अच्छा था। पॉइंट था। हाँ जी हाँ जी। हाँ, सो सिमिलरली अलग अलग विलेजेस में, यहाँ जो आसपास के विलेजेस हैं सभी में पॉन्ड्स थे, जिसमें से सी विलेज का पॉन्ड अब इन्होंने खोद के कुछ करने की कोशिश करी है दोबारा से, बिकॉज वहाँ पार्क बना दिया था, सूरदास पार्क। बट द एनजीटी हैज डेफिनेटली गिवन देम सम काइंड ऑफ अ डायरेक्टिव कि आप जो तुम्हारे पॉन्ड्स थे विलेजेस के, इनको रिवाइव करने की कोशिश करें। गुड। So this, as you rightly said, can definitely be pointed towards the municipal corporation who's running all this. So if we find some good person there who can sort of start with at least एक pond कोई पकड़ लें, एकदम से सारे नहीं, वो तो एक pond को भी ठीक करने में अपने को 3 से 4 साल निकल सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। यस सर। सोनू, अभी क्वेश्चंस कुछ लोगों के रेजिंग हैंड है, मिस्टर ए बी करके कोई है, आप इनको भी। Yes, ma'am. I request if they can write their question in the chat box, because if everyone will start unmuting their mic, it won't be easy for us to manage the things. Can they write their question in the chat box if they don't mind, please? सोनू, मुझे भी बता दो लिखना, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा लिखते कहाँ से लिखेंगे इसमें। सोनू मैम, आप बॉटम में देखेंगे तो 3 डॉट्स हैं, और ये वर्टिकल 3 डॉट्स, उन पर आप टैप करेंगे तो पहला ही ऑप्शन है इन कॉल मैसेजेस। ओके ओके, गॉट इट, ठीक है। Okay, I got that. I got a small question. I'll finish up with that instead of writing. Nirmal ji, आपका presentation is excellent, very concise and to the point. A lot of data inside that. Just wanted to ask you one thing. Anaphyto is basically an anaerobic process, followed by remediation, plant remediation. So since it's basically anaerobic, you expect from the waste to have methane to come out rather than carbon dioxide. So since there is no aeration separately being done, so is it's a good thing? I mean, methane is a very deadly gas as far as the global warming is concerned. See, understand one thing, the methane starts occurring only if you are able to grow methanogens efficiently. First. Number two, the depth of these tanks, what we are talking of in the anaerobic zone, is almost about 3 meters of water, not more than that. And for your information, the methanogens in an open kind of a tank can become active only at a depth of beyond 3 meters, because the oxygen can impinge right up till 3 meter depth of water. So unless you cap up the anaerobic digester with a proper hood kind of a thing, it will not ever generate methane to that extent. That's why I said it has to be designed for that purpose. So it is not a 100% anaerobic thing. No, there is anaerobic necessarily doesn't mean methanation. Anaerobic can be, अभी नाली में पानी बह रहा है, शुरू में वो थोड़ा ग्रे कलर का होता है, बाद में ब्लैक हो जाता है. It becomes black only because there is anaerobic digestion there, uncontrolled anaerobic digestion. Here we are talking of controlled anaerobic digestion. A septic tank is a controlled anaerobic digestion, but it's not a methanation plant per se, unless the effective depth of water goes beyond 3 meters. Okay, understood. There one more quick question on that. What is the area required for this particular plant totally, compared to an aerobic plant which a lot of communities have installed? Which aerobic? The one that is energy
Yeah, Means you're energy doing use in a aeration. kind of aeration model. Yeah. Well, Standard aeration. the investment X-ray and is the like area, you know, I'll tell you. area and Area required here is standard. going to be quite a large one. But then when you're talking of gardens and places where you have open spaces like villages, then for them operating the plant itself is very expensive because energy is very expensive today. That's right. So that becomes unviable. For example, who is prepared to spend something like 25 to 30 rupees a kiloliter? Okay, 30 to Yes. 35 rupees a kiloliter on a daily basis. So if you have something like 1 lakh liter of water, multiply by that by 30. Okay, so that is the problem. And maintenance, upkeep, and the depreciation of that, because eventually the equipment gets used up. If you have That's compressors, pumps, whatever. So here what we've tried to do is try to use the uh, gravity flow of the village. So we're doing another activity now in Ghata village, where astonishingly water is not getting into one single channel. We're getting water from something like 100 different pipes into that Ghata pond. Now what to do? Can we have one single pipe or two pipes collecting all that and making two sewage plants? Very difficult activity. And there's no space for that. So what we are doing is, again, we're getting into phyto remediation. So we are making small odd areas where we are able to get that water, do something on that, and that water cleans up and gets into the pond. So what we actually require is the feeding to the pond should be at least 30 by BOD, at least 30 BOD. Because beyond that, then the pond starts taking its activity by itself. okay. Ideally would have been much approaching zero, but then that's ideal, as they say. Any other questions, sir? Pradyum, you are asking some question, right? Uh, um, Nothing as such, Sonu. Oh, okay, Pradyum. Sir, there is one question in the chat box. Uh, Pawan sir is asking, the water consumed for food products and other items, as shared by you in the screenshots, seems very high. What sources of these, which Yes, period surveyed, I and which can. authority confirmed? Yeah, I can send you a link separately, and Nakwalji, you can study that. They're all actually studies conducted by various institutions and reputed institutions. I've not picked them up on my own. So I can send you those links. In order to keep the presentation short, I didn't put in all those links there. I can send you separately, Pawanji. Definitely, sir. All your many of the slides have already mentioned the sources. As far Yes. as I remember your slides, there Yes. were sources written in the downside, right? Yeah. Uh, I have already seen it. It is in the UNESCO IHE. Already it is there, and a very big study there. Very big study there on this. yes, sir. IHE is based in Norway and Netherlands, basically Netherlands. Yes. They have a small setup here in Delhi, but a very Mhm. small setup, only 2 or 3 people. But primarily they do their studies from the European side and come here and do that study. No, sir, it is Ma'am very is informative, no doubt about it. Your presentation was very informative, and let us join hand together to save water in our city. And Yeah, whatsoever way we can do it. sure. Yes, sir. thank you, sir. Ma'am, is there anything else, or we can conclude today's Yeah, session? after thanks. I have one announcement here. जो हमारा नेक्स्ट मंथ का वेबिनार है, हम लोग अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करेंगे। 7 अक्टूबर को हमारा फाउंडेशन डे होता है इको सवेरा का, तो 8 अक्टूबर को संडे है। वो डेट मैं आप लोगों को बता दूंगी। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम हम 7th को करेंगे। और उस टाइम जो है हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर जो भी हमारे पैनलिस्ट, जो अभी तक 6 पैनलिस्ट आए हैं, वो उस दिन प्रेजेंट हो, और जो हमारी ऑडियंस है वो उनसे क्वेश्चंस पूछें। तो ये मेरा आइडिया है। अब बाकी हम देखते हैं इसको किस तरीके से कर पाएंगे। यदि आप लोग सब एग्री होंगे तो इसको हम जरूर करना चाहेंगे, Yes, ma'am, I'm agree to you. क्योंकि
ऑडियंस कई बार क्वेश्चन नहीं पूछ पाती है, तो हमारा ये है कि उस दिन पैनलिस्ट सब लोग अपने अपना और किस तरीके से करेंगे, सोनू इसको मैनेज करेगा, क्वेश्चंस पहले लेंगे कि बाद में उस टाइम पूछना होगा, वो सब हम ग्रुप में डालते जाएंगे। तो सर मैं आपकी भी परमिशन चाहती हूँ, अगर 7 अक्टूबर को अवेलेबल होंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी जितने पैनलिस्ट अभी हमारे 5 और आए हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी। तो एक तो हमारी ये अनाउंसमेंट है जिसको हम फाउंडेशन डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे अपना इको सवेरा को। और सेकंड अनाउंसमेंट ये है कि इको सवेरा एक फेस्ट, एनुअल फेस्ट करने जा रहा है, जैसे कि हर साल हम लोग करते हैं इकोमेनिया। तो वो हमारा 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को है। तो एज ए वॉलेंटियर, तन मन धन जिस तरीके से भी आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सोनू। Thanks a lot to you, Pooja ji and Sonu ji, for giving me a chance to present my thoughts here, and look forward to everybody getting Thank you, Nirmal sir. active on to this subject as far as possible. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. So, as I move ahead to formally conclude today's session, on behalf of Eco Savera, it gives me immense pleasure to thank each one of you for joining today's session and being such a lovely audience and keen listener throughout the session. I extend my heartfelt thanks to our honorable speakers, Mr. Nirmal sir, A.K. Gaur sir, and Pooja ma'am, who despite their busy schedule spared time and shared this much valuable information with us. With this, I conclude today's session. Thank you, everyone.